नवरात्रि स्टार्ट हो गई है, पर मुझे पता है कि टेंशन अभी भी होगी आपको, बिकॉज अगर अभी तक एडमिशन नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा. काम डाउन, ओके, काम डाउन, इट्स फाइन. गिव योर सेल्फ अ ब्रेक, enjoy Navratri, and then start again with your proposal. And one more thing, you should know that bibliography is actually very very important for your research proposal. क्योंकि अगर कोई इंटरव्यूअर है तो उसके पास उतना टाइम नहीं है कि वो आपका रिसर्च प्रपोजल पढ़े. द फर्स्ट थिंग दैट ही और शी लुक्स एट इज योर बिब्लियोग्राफी, द सोर्सेज यू हैव कंसल्टेड, बिकॉज that is reflective of the amount of knowledge you have summed up for your research proposal and what kind of resources you have consulted, and they can easily judge from the research bibliography what kind of knowledge you have stuffed up in your mind and what are you presenting in the research. Okay, so you can't fool professors, because just looking at the bibliography they'll come to know what amount of work you have done. Have you done it honestly or not? Okay, so yeah, this is what I have to mention, and also the kind of sources that you consult. Having said that, I have made a small kind of video on the how to search, and it is specially for beginners because उनको पता नहीं होता कि सर्च कैसे करना है, गूगल स्कॉलर क्या होता है, एनाज आर्काइव क्या होता है. तो आई हैव जस्ट मेड अ स्मॉल वीडियो ऑन दैट. काइंडली सी एंड learn from it if you don't know. Okay, bye. And the last thing I want to mention is that if you make a bibliography from ChatGPT, पता चल जाएगा, ठीक है. If you are aiming for a good university and you are not doing the amount of work that is required from you, उनको पता चल जाएगा कि आपने कोई काम नहीं किया है, आपने ChatGPT के citations या bibliography बना के डाल दी है. So reconsider yourself while doing that. Do it थोड़ा ध्यान से, and do it very cautiously. ऐसा ना हो कि पता चल जाए लोगों को, पता चल जाए प्रोफेसर्स को. लास्ट नॉलेज.